Yeah, good afternoon. Can you hear me? I can hear you, TMD. Are you ready to start? Yeah, you can. Yes, you can. Okay, I'll just bring you in a minute. I'll just give some introduction and I'll bring you in. Okay. We still have about 3 minutes to go, right? Yeah. That presentation of last time, you're going to make it again, or you're going to make the same thing? I'm going to start with the recap and then we can go ahead with the reviews. We already have people in. So should I do the presentation of PPT again, like briefly, like last time? What is the framework? Yeah, Okay. I got a PPT, so allow me to share later on. We'll start in another 2 minutes. Yeah. Can you see my screen? Yeah. How many people are there today in the question sessions? I'll ask Archana to share the details. We still have about 2 minutes to start the event. And we have 4 people as usual to review the resumes. Okay. And those 4 people are also there inside the session, right? They're coming into session. Yeah, they are. Two of them. Yeah. Okay. So good evening, everybody. My name is Akshata, and I am the moderator for this YouTube channel. Like always, I'm going to start with introducing this YouTube channel. This is the first of its kind. It's very unique, and it is a YouTube channel for the youth of the nation. And here, what we are trying to do is trying to answer questions, any doubts, anything that people have, any queries that people have regarding careers and jobs, which they don't get on Google or on YouTube. We are here to answer these questions for them. So if you want your career queries answered by us, by Mr. T. Muralidharan, you can just drop in a comment and we will get those questions answered for you. Now, the second thing that I want to tell, obviously, is about Mr. T. Muralidharan. He is a serial entrepreneur, a journalist, a public speaker, and I can go on and on. But what should matter to you is he is a man who's hired more than 3 lakh people. He's hired about 4 lakh and some change. I can't even keep a track of the number. But a person who's hired so many people has looked at that many CVs and more, of course. So this man knows how to look at a CV, how to judge a CV, and that's why we are doing this session, because his passion is to help the youth of the nation get better jobs, find the right jobs for themselves. So before I bring him on to review the resumes for today, I want to give you a recap of what we did on in the last week, in the last session. So the most important thing in a CV is you should not make any spelling errors. If your English is not good, you should get your your resume spell check done by someone in your family who has a good command over the language. But there should be no spelling errors on your resume. The second thing that we understood from Mr. T. Muralidharan is a resume should be customized not just for the role that you're applying for, but also the company that you're applying for.
That makes the company feel that you are interested in the job. You have invested your time in making the CV for them. The third thing that you need to understand is personal interests are not something that you put at the bottom of the CV, but at the top, where you write about you. That's where you can include the personal interests that you have. Hobbies are something that are not important for the recruiter unless they matter for the job. So if your hobbies are relating or somewhere it can help you get the job or it can help your role, then you have to mention your hobbies. Your resume should not be too many pages long, because if it is too many pages long, a recruiter generally forgets the previous page when they turn the page. So that is another thing that you must keep in mind. The next thing that you need to keep in mind is you need to highlight the important things. If you have achieved an award somewhere, if you've done an interesting project which is important for the role, you need to highlight that particular thing. Not only this, any online certifications which is important for the job, that also must be highlighted, and what certification you've done, from where you've done, and how it will be relevant for the job. If you could mention that, even that would be a good thing to do. The next thing that you need to understand is you need to add adjectives to your marks and to your school. What I mean by adjectives is, suppose you've got about 80%, you can mention that you were in the top 10 people in your class, or top 10 people in your college. If you've got if your school is a well-known school, or is a prominent university or educational institution in the country or in the world, that also needs to be mentioned. If you're a gold medalist, if you won some kind of an award, even that has to be highlighted on your resume. Now, that being said, I want to start with a question to you, Mr. TMD. And my first question to you is, I read somewhere that 76% of the resumes are frowned upon or rejected because of the email ID that is mentioned. And the email, a weird email ID that is mentioned. Suppose it is cuddlybear@yahoo.com, or relax yourself or something, or Ritik Roshan _Samantha@gmail.com. So these email IDs are frowned upon by the recruiters. How much of it is true? What would you like to say about it? In my mind, I think many of us, when you look at the resume, the email ID is normally mentioned either in the top or in the bottom of the resume. Yes. So it's not something I look for in the beginning. Yeah. But it is quite likely that if a resume, this resume process or job search process is a serious process. You can't be frivolous about it. Yeah. You cannot say TMD@timbuktu.com. Yeah. It doesn't sense give you the right sense about it. So it's quite likely. So I would say first part of it is correct, that people may frown upon it, but the 76% seems to be a high number. It may not be that higher percentage. I think it might be lower percentage, but I would not take a chance by putting a frivolous and a casual email ID. Correct. As much as possible, put your name and whatever your name is, etc. Makes a lot of sense. People don't want any bogus people applying, or people or pseudonyms and all that. It's not a good idea. Okay. So let's go ahead and do our the presentation that you wanted to do, TMD, and then we can start with our resume review. All right. So I think many people don't understand what is the resume, what does it do to you, for you, right? I think this is an important question we need to ask ourselves. What does the resume do for you? And I always say, imagine that you are sending a resume to somebody. That person is not seeing you because the resume has gone by email. The person opens an email, and the resume is actually representing you. He is your ambassador. Ambassador means what is said in the resume, how it is said in the resume is supposed to represent who you are. So the first stupid mistake people do is to cut and paste somebody else's resume. If you understand this, if the resume is representing who you are, all of us are not the same. Akshita is different from
Archana, who is different from somebody else. So there cannot be a cut and paste resume. It's like shooting yourself in your foot, right? So it represents you. So what happens? You don't have a voice there. You're not able to tell, hey, this is what I am. You can't do that because the resume is speaking on your behalf. And that is why we say the resume is extremely important. In your absence, it represents you. And it should represent me, means who you are must come out in the resume, how you became what you are. All of them should be clearly mentioned. So this is the first point. I think we must get it. What we will try and talk about what works and what doesn't work and why, and the 6-step resume writing process. I think this is the last one is more important. The first few of them, you already mentioned some of them, but I'll quickly summarize this. This is a very classic case study. When you write a resume, you think you are writing a resume which will make you look like Eiffel Tower. That means perfectly balanced, you have highlighted all your key points, and you think the other party will look like your resume and think he thinks he's looking like a Eiffel Tower. But actually what it looks like when other party reads is on the right-hand side. The transmission tower, right? And you know the difference. Eiffel Tower is unique. Worldwide is one of the top 10 places to go. And this is a very mundane, mediocre, there are millions of transmission towers, right? So you try to make an exclusive resume, you might end up looking like this. This is what this figure, you should understand this picture tells you 1,000 words, tells you, right? You don't want to look like the transmission tower. You want to look like Eiffel Tower. Here, there is a very interesting experiment in Stanford University. They asked a set of people, called them, divided into 2 groups. One is called the psychological experiment in 1990. And these students were given 2 roles. One is called tappers and listeners. So the tappers were called separately and then given 25 most popular songs. They're called jingles, like Jingle Bell, etc. They were told the tunes. And then they said, why don't you tap it? That tune. First visualize the tune and type it. And then we'll ask the other party to guess what the tune was, right? I mean, very simple thing. So the guys played the tune quietly in the corner. They listened to it. The tapper went and tapped it. Literally, like tapping means typing with your hand. Tack, 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 whatever you say, right? And later on, they found out only 2.5% of the people got it on the listener side. So the question was asked, how is it possible? And then you go and ask a tapper, what do you mean? I tapped it so well because I knew the song very well. It was playing in my mind. So I'm actually typing from the whatever I could play in my mind. What the tapper did not know was what was he typing was only in his mind. It was not in the other party's mind. They didn't know what song is being played, right? Resume is exactly like that. You think you know yourself well. So you write a resume because you're tapping exactly what you think you know about yourself. The other party doesn't know you. I mean, they don't know the song, right? And therefore, they cannot figure out your resume as easily as you write. That is why we talk about making 5 or 6 revisions of the resume again and again and again to make sure that the tune, that is your resume that you write, is something is understood the same way that you write. It should be understood by the other party, right? Now, these are some of the very interesting statistics. And basically, it says that cover letter is normally a very good habit to send along with the resume. And most important thing people look for, this is some of the important things they look for, but work experience is by far the most important and relevant qualification. You can see the bottom 2 are the most important. If you have worked in a premier, studied in a premier school or a college, it should highlight it. And the top 5 accomplishments, 107. So these 4 things obviously will come out as what is the priority in the resume, right? When we talk about what are the key components, this survey tells you when they ask a lot of consultants, what do you look for in the resume? This is how they valued it. So relevant experience is the most important. Why? Because companies are looking to give you a job where you can work for them from day one. You should start performing for them from day one based on the past experience. Some of the complaints which you talked about, what are the major complaints people have? Biggest complaint, 194 of them said spelling and grammar errors. Believe me, it stands out in the resume, right? And normally people just throw it out. If you make a mistake in spelling and grammar mistakes, you can always argue, so what's so great about spelling mistake? Why can't you not understand? He says, what you don't understand is, I get 100 resumes. I'm going to shortlist 10 resumes only
for the interview. 90 resumes I'm going to throw. So I'm looking for an excuse to throw. Any one of these happens, I tend to throw it out. Only 10% are retained, right? This is an important thing. So let's end by saying what I would call my TMD's evaluation criteria. When I look at a resume, what do I look at it, right? The other ones are all what others do. First, look and feel should be clean, neat. There should be, as I said, no spelling mistake. It should not have too many highlights. The look and feel should be clean. Second, the size of the thing should not exceed 2 pages. If you're a very senior person, 3 pages. Freshers, normally 1 to 1.5 pages maximum. The total time I should take to read is normally less than 10 to 15 seconds. That's all I'm going to spend on the resume. So you have a responsibility to highlight what I must see in the first 10 seconds. Now you can imagine how much pressure is on you because you're writing the resume and I'm seeing it and I've got only 10 seconds to see. Use font and color very carefully. Don't overdo this, but it's very minimally used, but it highlights what you want to do. When you say font, mean boldface. When you make thicker font, but it's called boldface, right? Always introduce yourself. I told you this resume represents you. It's an ambassador. So who are you? So describe who I am and what is where am I today? This is a very important portion. If you're doing a job, then you say this is what I am. When you're describing who you are, describe your personality. Like whether you're a person with a problem solver, you like to take on challenges. So these are something which should be very truthful and honest. You should not cut and paste from somebody else. You have to spend a lot of time thinking how to describe yourself. And then start with saying, where are you today? People want to know, they want to hire you from where you are. So don't write in the bottom of the next page, where are you today? Immediately say, this is my current job. Next, education. Education may always, people are most interested in your highest qualification and then the next qualification. So the highest qualification should be highlighted. If you're an MTech, highlight the MTech and then go to BTech. Don't write SSLC, then PUC, then you write undergraduation, graduation. No, reverse order, always. And the chronology of work also in the reverse order. Where did you study? Where are you working now? Where did you work before? And each of the job roles, if you can mention, what are the environment? What did you learn? What did you achieve? That's a great way to describe your experience. There's no point in saying I work from so-and-so date to so-and-so date. So what? What I want to know is what did you do there? What did you achieve? What did you learn there? And top 3 skills is very important. At the end of the day, you can change the top 3 skills based on the job you're applying for. But the top 3 skills should be very clearly is something everybody look for. Do you have the skills which are advertised for that position? If the top 3 skills are matching, the chance of getting shortlisted are high. Okay. And the last piece is never make a resume before researching the role. What is the role? There are a lot of websites where it explains what the role is, what skills are required for the role. It's already there in the web. Secondly, identify the employer. Are they an aggressive company? Are they multinational? Or the Indian company? Are they very large company, small company? These 2 research you have to do before you start writing the resume. Okay, I'll stop here and we're going to start off by looking at some of the resumes from this framework. But as I said, I'll summarize by saying resume is going to speak about you. What it says about you is in your hand. It has to say what you want to say about yourself in 10 to 15 seconds. And therefore, the highlighting and the important pieces should come on top. Don't put junk on top because by the time you go to the bottom, people get tired. And customize the resume for each and every role. So I'm going to stop here and we will start off by looking at some of the resumes. Thank you, TMD. That was really insightful. I think from the last session, one request that we've been getting is to, simplify whatever people have been saying. So I will take after the resume session, after TMD is reviewed 4 resumes, what I'm going to do is I'm going to take 10 minutes and I'm going to explain everything that TMD has said in Hindi and preferably if I'm able to in Telugu and Tamil. So we'll do that after the resume session is done. So I'll bring on the first person whose resume we are going to review, TMD. This person has specially requested that we try and speak to him in Hindi. So in case you're not able to do it, I will translate wherever it's possible. Mr. Ravi, क्या आप अपने आप को unmute कर सकते हैं, please?
आप हैं रवि जी, आप कॉल पे हैं? Ravi, can you unmute yourself? Are you there? Okay, we'll circle back to Ravi. Archana, I request you to try and reach out to him. I'll open the second resume and Mr. Mani Kumar, can you unmute yourself, please? Hello. Hi, Mani. Hi. Hi, madam. Would you be able to come on video, or are you comfortable staying off video? I'm comfortable staying open on for the video. Okay. TMD, Yeah, go ahead. Yeah, no problem. can you see my Yeah, screen? yeah, ma'am. If you don't mind, after sharing my resume to your website, later I have done some modifications to my resume itself. Can I reshare that one from my laptop or Yeah, sure. any If you can media share your that? screen, can you share your screen? Yeah, sure, ma'am. Share screen. Ma'am, can you see my screen? Not yet. Okay. Yeah, now we can Yeah, see. ma'am. Yeah. TMD, over to you. I think you put that on the top designation. Can you make a single page? Yeah, make it a little bigger for me to read. I think can Okay, you sir. make the bottom bigger? Yeah, that's better. Yeah. So first of all, by putting the designation software engineer, are you applying for a software engineer's position, or you are currently a software engineer? Yes, I am a currently software engineer. Sir. My role more is Power BI developer in the field of business intelligence reports designing and all. But I understand. So initially I normally, put it as a software engineer. so basically, it's important to say normally when you apply in the top, you should put what you want to apply for. For example, you might Okay, sir. apply for a business analyst, or you might apply for senior software engineer. So by putting a Okay, sir. designation software engineer on top, you're actually preventing people to look at you for any other position. You understand? So I will not put that in the top, right? I'll put it in the main in the professional summary, current designation somewhere, right? But I wouldn't put it in the Yes, top sir. left corner because it makes me believe that you're only fit to be a software engineer. Okay. Okay, sir. Sir, here one of the doubt I have, sir. Actually, I am a Power BI developer, which comes under business intelligence application designs. Yes. But I don't know I checked some more resumes in online. There it is mentioned. Somebody is mentioning that BI business intelligence analyst and data analyst. They are providing. They're referring for the whole domain of what they are working inside. Like Yeah, that, should I I would say that. mention? Yeah. I think I understood your question. There are something called title and there's something called role. Yes, Title sir. is what the company calls you. The company might call you software engineer. A role is what you actually do. Like, for example, you said in BI, you are a developer under BI because application and design, what you are saying, right? Design and development and maintenance. So if you say, any software, the most important part is the solution architecting is one part. Second part is designing the software or writing the code using that business intelligence software, and then doing some amount of testing, and then that's what you do in BI typically, right? So Yes, sir. in your case, you do most of the time you do development, right? What do you do in BI? Yes, Right. developing the reports, Correct. So I would dashboards, and say, but developing a report, you can't develop a report unless you analyze the requirement, right? Or whatever the architect, you need to architect the solution. In other words, what do you want to show and why are you trying to show? That you have to understand, and only you can visualize and present it, right? In BI. yes, sir. So the business intelligence piece is more important. That means whatever you are showing must make some sense to the other party. So I would not put software engineer. I'd put that BI specialist is a better word. I would put, because then you are focused clearly, you're a BI and you're a specialist in BI. Is what I would put. Yes, sir. Right. And that's the question you had in mind, correct?
Yes, sir. Yes. Yeah, but software engineer is confusing because there are so many software engineers, you're not standing out. Okay. And Yes. secondly, you have said 4.3 years of IT industry experience in business analytics and design. You're applying for a BI for road. So you will not, I would not write 4.3 years of IT industry experience. I would write 4.3 years of BI experience if I have so many years of BI. Do you understand that? What it looks like Yes, when sir. you read this, it looks like 4.3 years of IT, and BI you have very little experience. Okay, sir. If all the 4 years are in BI, then highlight that 4.3 years of BI. Okay. Okay, sir. Well, the second part is good knowledge of developing reports and dashboards using Microsoft Power BI. So are you aware of only Microsoft Power BI? You're not aware of other platforms? You're expert No, on- sir. I don't know about other tools. This is the tool I have maximum knowledge. Fair enough. So I think then obviously the Power BI, Microsoft Power BI must get highlighted in bold. Okay, sir. Because when the eye travels, it travels to mouse. When the first question is, oh, you're a BI guy, and which platform are you working? Immediately it shows Microsoft Power BI. You make it bold, right? Okay, sir. And the other things like expertise in identifying the right features, many of them are understood. There's nothing great about it, right? BI itself is a platform. It's got a very structured way of how you're supposed to code, right? It is not a coding platform from ground up. It's all ready-made platform. So you Yes, need not sir. spend too much of time. What you might like to do here is probably interface with Power BI. For example, Power BI pulls a lot of data from multiple other legacy applications, right? Are you pulling Yes, sir. data from multiple sources, right? Are you understand what I'm saying? In Power BI, the data might be coming from multiple legacy systems, right? Yes, sir. Yes, sir. Like so many sources we can pull the data from. That should be highlighted. Okay, Because sir. in Power BI, there are two parts. Where are you getting your data from and what are you visualizing them as, right? Like bubble maps, Yes, sir. pre-map. These are all very important. So I would say I am an expert for 4 years. I worked in the Power BI space, worked with Microsoft Power BI. I've used this kind of databases. I pull data from these kind of databases and I produce this kind of outcome. Okay, sir. To highlight one or two complexity of the problem, right? What is so special? Assuming there are 10 Power BI guys like you, what have we done something different than the rest? Otherwise, you're one among 10, right? Yes, sir. So what is that you have done? Highlight one project which is really done differently. Sometimes the complexity in Power BI is also measured by how many weeks of effort was involved, right? It's an 8-week project, 12-week project, 16-week project. That also will help. If it's a large project, then it's almost better. Sometimes some Power BI projects are very small projects, right? Yes, sir. So you should highlight that have we worked on complex problems? How are you different from the next? Okay. Okay, sir. You don't need so many points. I will reduce it to probably 4 or 5 points only. But highlight only those because the rest of them is understood. Everybody knows it requires data analytics, it requires expressions in Microsoft Power BI. Everybody knows it, right? When you work in Power BI analyst means what? All of them Power BI does. What do you do? It's not what Power BI does. It's all about what you have done in Power BI. You understand? Yeah. Yes, sir. Yes. Okay. Go down now. Go down, please. Second part you're looking for experience. You're working in Tech Mahindra. Yes, Tech Mahindra is a good brand. You highlighted it correctly. That's perfectly correct. 2018 to present. That means all the 4 years you've been there. And you mentioned some project descriptions. Okay. And as a Power BI developer. Okay. Again, this also you must reduce it because how many pages is your resume? Yeah, it's a 3 pages, sir. Yeah, you have to bring it down to 1.5 to 2 pages. Okay. So Okay, whatever sir. is obvious, Okay. whatever everybody knows about this, delete it. Okay, sir. Okay. Yeah. Okay. And you have not said anything about who you are. What kind of person are you? First, I told you about who is. Can you put an adjective about yourself? What kind of person are you? It's not about Like, hardworking. I'm not a hardworking person, and all is not what we mean. Are you, for example, with a very strong problem-solving mindset? You collaborate with a lot of people. You have a very high level of collaboration. So there are a lot of adjectives available about your personality.
and you work under, you can take a lot of stress. You work under very tough timelines. Now, these are all some of the very good adjectives you can use to describe who you are. Yes, sir. Right? Now, what they are, they must be truthful. You can't make up. You can't cut and paste. Yes, sir. Yes. Yeah, but you go online and check what are the things. How will you describe? Supposing I asked you, okay, Mani, na, your name? Yeah. Yes, sir. Yes. Tell me something. Tell me about 10 words about you. Imagine somebody asked you that question. How will you reply? You will not say, I'm born in Vizag, my grandfather is so. That is not of interest. Who are you right now? That's all I'm interested in. Okay? That should be the first paragraph on top. Right? About Okay. So I would say, for example, I am a very analytical person throughout my life. I mean, analytical person. I work very well in teams. I take a lot of stress. And I'm looking for, whatever I do, I look for expertise. And I'm always looking to work toward the next higher level of platform and higher level. I spend a lot of time learning. So you bring out aspects about you which makes the person, hey, I want to hire this guy. Okay? Yes. Yes. Go down, yeah. So all this as a Power BI developer is not important because they're all, everybody knows. Everybody has the same thing. If everybody has the same thing, don't put it. It doesn't make any difference. What others won't put, what is unique about you, only you should highlight. Rest of them, the guy who's reviewing the resume already know what Power BI is, right? Yes, sir. Yes. Go down, yeah. Go down, please. Yeah. This is also my projects. Reduce the number of projects. You should look at those projects which are relevant to what you are applying for. And you also know among the projects you have done, some of them are very difficult projects that should come on top. Don't put easy project. That means 2 weeks. The duration of projects are not there in this. No, sir. Actually, duration is always there, sir. But I didn't mention it as. Yeah, but the duration is a sign of complexity, right? If you look at a 1 week project, yes, if you put it, nobody will take you seriously. Okay, sir. Okay. Select which is the highest duration of the project, where large number of teams are working. You're part of a larger team. That should be the number one because that's the most complex project. And when people look at your resume, when the first few places you see a very complex project you've done, they won't read the rest of the resume. They'll skip it. Go down. Yeah. Okay, sir. Sir, another doubt, sir. Like, there should be any criteria such like I should be put my projects in a ascending or descending order, or just like you were saying that the many days that. I answered that. Put the projects in the descending order. The most complex project should be on top. Okay. Which you have put a lot of time and energy, where you learned a lot, where you contributed a lot. So they will start there only. Tell me about that project. So you can explain in great detail. Don't put a project where you do only peripherally. You are one of the team members. There are a very small amount of work you do. They ask you 4 or 5 questions on the project. You cannot explain properly. Yes, sir. Right? Where you get deep involvement, that should be number one in descending order of that. Okay. Okay, sir. Right. Go down. See, we are getting a lot of projects, but I want to know what's the qualification. So the academic profile, basically a BTech, Bachelor of Technology from Vishnu Institute of Technology, Bhimavaram. See, now you look at it. I don't know what Vishnu Institute of Technology is, Bhimavaram, yes, right? So what I'm going to assume, yes, sir, it's not a good college, some sidey college. Now, what you have to write now is Vishnu Institute of College of Technology, Bhimavaram is one of the top 5 colleges in Andhra Pradesh, something like that. Some description about what the ranking of the college in Andhra. Okay. Okay. You have to hype up the name of the institute. Otherwise, it looks like a very ordinary institute. So nobody wants to know. That means you don't have any brownie points on the qualification. Secondly, how did you do well? How well did you do in the class, right? Where you're topper, you're the top 10% of the class. That should also be highlighted in that. Okay, sir. Right? Otherwise, it looks like other things like operating Windows 8, Windows 10, Azure, SQL. Some of them are not. Power BI is important, right? Databases are important. Sir. Testing tools are definitely important. But Windows 8, Windows 10, what is this? I don't understand. What's the purpose of putting that? So you have to put only what is required to prove the point that you are an expert. Okay, sir. Cut the declaration out. Nobody listens to this. It's not important. Okay, sir. Okay, sir. Okay.
All right. So I think you got some ideas, and later on, I think you can. We will also post the PPT which I have made here. So very much, many pages are there. Akshita blindly posted in our career site, so that anybody can come and see the PPT and I take will. notes, right? I will, sir. I will. Okay, sir. Okay, sir. All right. Thank Good luck. Good Thank luck. you, sir. Mani. Thank you. Yes. So TMD, before we start, my next question to you would be, if so you've told everybody that they must write something on their resume about themselves, and they must write about uh, something to describe their personality, right? So now my question to you is, if I'm not good with words, if I'm not decent with English, how am I supposed to write about myself? So normally, when you say who you are, you write more about what are you good at. You don't write what you're not good at, because then the attention will go there. Then say, well, you're not good in English, and they'll ask you questions in English, and then eliminate you. So I will not put in the first paragraph anything negative. I'll put all positive things about me. But writing a paragraph itself is very challenging for people. Yes, and that is why you spend 5 hours to writing the resume. You don't write the resume in 2 minutes. You write the resume in 2 minutes. What people do, cut and paste, open file for resume, cut and paste something. And that's it. The amount of time you take to write the resume, the amount of time it takes to throw it out. Yeah. So if you write the resume in 2 minutes, I'll throw it out in 2 minutes. If you take 5 hours to write the resume carefully, word by word, then it takes difficult for me to reject you. But Temni, one culture that I've seen, especially where places where regional languages hold a lot of importance, right? Even in Hyderabad, for that matter, Delhi, for that matter, people have not spoken or written in English unless it is like, something they've mugged up for exams, right? How do you expect these kind of people to put something into sentences? What suggestions can you give for such people? No, I'll go one step higher. How important English is, let's say, in software industry. Yeah. It's as good as software. Because you're dealing with clients are international. And if you cannot express yourself properly in English, you cannot grow in the IT industry. It may not be as important in BFSI. For example, you're doing a sales job in BFSI, the English language is not important. Absolutely. Your customer speak mother tongue. So you're speaking mother tongue to mother tongue. So if your English is not very good, I will take it as like you're learning a software. You go and what do? You enroll in a college, go to place, enroll for a course, write the exam. I'll enroll for an English speaking and public speaking course. I'll put my money on it. I'll have to practice. I'll do that seriously. The way I'm learning, let's say Power BI, or I'm learning something like a language like Java, the same intensity I have to bring for English. There's no shortcut to it. In IT industry, I'm talking about specifically, right? Yeah. Because many times what Indians don't understand is when a foreigner talks to you, as it is, we have an accent problem. We can't understand the accent. Secondly, they're very impatient. They will not repeat second time. You can't say, sir, can you repeat that? They get irritated. Yeah. So you not only have to understand the accent, you should also understand what exactly that person, even that person is not clear what he is saying. Right? He's rambling. He's coming on top of his mind. So you need to understand the accent, what he's saying and what he's not saying, put together and summarize. Is that what you are saying, sir? I have to summarize. So for that, we require a high level of English. I think for people to connect well with this, whatever you're saying, TMD, a very famous actress called Kangana Ranaut, when she started her career, her English was not very good, but she took training. And if you now listen to her interviews, there's a huge and a drastic change in her English. So for everybody who needs a little bit of motivation, you guys should see how she was when she entered and how she is now. That being said, let's go to the second resume, TMD. Ravi, आप आ गए हैं? Can you unmute yourself, Ravi? I think we can unmute. Yeah. Please there. Yeah. Yes, ma'am. हाँ जी, तो रवि आपका रेज्यूमे शेयर करेंगे अभी, तो आपको जो भी डाउट्स है आप सर से पूछ सकते हैं या so over to you, TMD. Yeah, you need to make it bigger first. I can't read it. I'll do that. Yes, ma'am. Yeah, थोड़ा बड़ा करिए.
पहले रवि कुमार जी, आप कौन गुड सा इवनिंग सर। आपका कौन सा नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? सर उसमें डिजाइन में जाना चाहता हूँ सर मैं। डिजाइन? यस सर। वेब डिजाइन मतलब वेब डिजाइन? नो सर, मतलब कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह। हाँ, ओके, सिविल डिजाइन, यस सर, यस सिविल सर, इंजीनियरिंग डिजाइन। यस सर। ओके ओके ओके। सर इसके लिए मैंने 2 मतलब ये 3 मंथ का एक्सपीरियंस भी लिया है ऑटोकैड से सर। ओके, अब बीटेक सिविल खत्म नहीं हुआ आपका? सर परसोइंग पे है सर, फाइनल है। कभी है एग्जाम, कभी है आपका? सर ये एग्जाम मेरे 30 तारीख से है सर, 30 मई से। 30 मई से? अच्छा। यस सर। अभी तक कितना सब्जेक्ट कैरी कर रहे हैं आप? सर 3 सब्जेक्ट की। अच्छा, और 3 सब्जेक्ट को भी कभी करेंगे एग्जाम, लिखेंगे उसका एक साथ अभी और लिखेंगे, उसके बाद अलग, उसके लिए अलग टाइम आएगा? नहीं सर, फिलहाल तो उसी में से कुछ टाइम निकाल कर बस इसी की तैयारी कर रहा हूँ थोड़ा, मतलब कि बेसिक नॉलेज। जैसे कि सर ऑटो कैड में जैसे कि सर मतलब कि कम पूछे जाते हैं सर इंटरव्यू में क्वेश्चन कुछ बिल्डिंग से रिलेटेड, ब्रिज से रिलेटेड। अदरवाइज एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। यस सिविल सर, इंजीनियरिंग डिजाइन एक स्पेशलाइज जॉब है। यस मतलब सर, आप पहले पर ये सीख रहे हैं, आपको अंदर डाल देगा तो वो डिजाइन का क्या होगा? यस, इसलिए तो आपको पहले कोई डिजाइन नौकरी नहीं, कोई नहीं देगा। यस सर। सर्वेयर नौकरी मिल सकता है आपको, कंस्ट्रक्शन में आपको कुछ क्वालिटी में मिल सकता है, और साइज समथिंग सर साइट पे मिल जाएगा वर्क। साइट साइट एक्टिविटीज में ज्यादा मिलेगा आपको। इसलिए तो यस सर, डिजाइन में मिलना बहुत मुश्किल है। वैसे भी आप 3 सब्जेक्ट कैरी कर रहे हैं। यस सर। डिजाइन तो सबसे सबसे आगे होना चाहिए। सबसे टॉपर्स को डिजाइन में हम लगाते हैं, क्योंकि डिजाइन में आप गलती करेगा तो बिल्डिंग गिर जाएगा ना। यस सर, यस सर, और इसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, सिविल है, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है, बहुत कुछ मटेरियल डिजाइन में बहुत कुछ काम है। तो इसलिए तो यस सर, आप पहले पहले डिजाइन को अप्लाई करना नहीं चाहिए, यस सर, क्योंकि आपका परसेंटेज 52% है, आप टॉपर नहीं यस है। सर, समझो आप क्लास में टॉप है सिविल इंजीनियरिंग में, फिर आप डिजाइन को मोस्टली चुन सकते हैं। तो इसलिए तो मैं आपको पहले ही राय देता हूँ कि आप पहले डिजाइन के लिए डिजाइन नौकरी मत ढूंढिए, यस सर। पहले वैसे साइट सर काम मतलब करिए। कि सर मतलब कि वैसे तो साइट पे चल रहा है जो, मतलब कि मैं देख रहा हूँ सर फिलहाल जॉब वगैरह साइट पर ही देख रहा हूँ, क्योंकि उससे ऐसा हो जाएगा सर थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। हाँ, वही पहले साइट में थोड़ा जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यस सर, यस सर, सब लिखा है, ऑटो कैड सॉफ्टवेयर सब लिखा है, यस सर, ये यस सर, कितना आपका कॉम्पिटेंस है ऑटो कैड में? यस सर। आप ऑटो कैड कितना जानते हैं आप? ऑटोकैड सर मतलब कि कंपलसरी पूरा से ही जानता हूँ, पूरा सो ये कह नहीं सकता सर, मतलब 2 मंथ तो मैंने इसको पढ़ा है सर, और 1 पढ़ा मंथ नहीं, मतलब पढ़ाई पढ़ाई छोड़िए, कितना? समझो आपको मैं एग्जाम देगा ऑटो कैड में, जी कितना परसेंटेज आएगा आपको? हम हमको 20 क्वेश्चन पूछते हैं ऑटो कैड में। सर लगभग 70%। वही ये इम्पोर्टेंट है, आप समझना चाहिए। समझो यस एक सर, तरफ आप डिजाइन के लिए जा रहे हैं, यस सर, डिजाइन के लिए ऑटो कैड यूज करेंगे। यस सर, ऑटो कैड में 100% आना चाहिए आपको। 100% सर। हाँ, मतलब उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऑटो कैड में यस इतना सर, यूज यस किया। सर। आपके पास लैपटॉप है? लैपटॉप है? नोट सर, लैपटॉप तो नहीं है हमारे पास सर। हाँ, पहले लैपटॉप का बंदोबस्त करिए, उसमें ऑटो कैड होना यस चाहिए। सर, ऑटो कैड सर, लोड करिए लैपटॉप में, जो भी आप करते हैं, आप डिजाइन करना चाहते हैं, डिजाइन सॉफ्टवेयर का पहले बात कर रहे थे पावर बीआई। यस सर, पावर बीआई तो बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है। यस सर, सॉफ्टवेयर का एक्सपर्टीज होना चाहिए डिजाइन के लिए। यस सर, सिमिलरली ऑटो कैड का आप उस्ताद उस्ताद होना चाहिए। यस सर, उस्ताद होने के लिए आपके पास बुक होना चाहिए। रात को दिन में आप सोचते हैं ऑटो कैड, आप थोड़ा कोशिश करते हैं, डिजाइन प्रेस करते हैं, इतना इंटरेस्ट होना चाहिए, नहीं तो आप अप्लाई नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप क्या यस करेंगे, सर, आपको इंटरव्यू में बुलाऊंगा, 4 सवाल पूछूंगा ऑटो कैड में, आपको एक भी जवाब ना आएगा, आपको आपको भेज दूंगा। यस सर, रिज्यूमे में कुछ भी मत लिखना जिसमें आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है, जो आप बात कर सकते हैं 10 मिनट वो टॉपिक के ऊपर। यस सर, समझ गए ना? यस सर, यस सर, सो रिज्यूमे में पहले वही बताओ, ऑब्जेक्टिव जो बात करते हैं
work in an organization. So I would say that I would like to, I want to be a very good civil engineer, and I want to start my career with a field on the field in civil engineering. Yes, And sir. I'd like to be either in surveying or in construction. Yes, And sir. then I would finally like to specialize in design, civil design. तो लाइक दैट ऐसा लिखेगा तो मालूम पड़ता है, तो आपको जनरली लिखता है, या आप कट एंड पेस्ट किया क्या, आप खुद नहीं लिखा है, लिखता है अब Yes, किसी sir. रिज्यूमे से आप काट के रखा है ना, तो ऑब्जेक्टिव। यस सर, मतलब ये अटेम्प्ट खुद ही किया था मैंने, मतलब लैपटॉप बनवाया था एक लड़के दोस्त का। वही इसलिए तो मैं आज इतना समझा रहा था सबको, कोई भी इसमें जो भी वर्ड है आपके हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। यस सर। किसी और का कट एंड पेस्ट करेगा तो चले, आपको नौकरी नहीं मिलेगा। यस सर। हम लोग मालूम पड़ता है, 2-3 मिनट में मालूम पड़ता है ये तो कट एंड पेस्ट है। यस सर। कट एंड पेस्ट देखेगा तो हम फेंक देते हैं। यस सर। राइट, सिमिलरली जैसे मैं आप बताया था, आपको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है अभी, खाली स्ट्रेंथ्स है। स्ट्रेंथ फॉर एग्जांपल अब क्या लिखा है, हार्ड एंड स्मार्ट वर्किंग। ये इसका मतलब स्मार्ट वर्किंग क्या मतलब है, आपका कुछ आइडिया है स्मार्ट वर्किंग का मतलब क्या है? स्मार्ट वर्किंग के सर, हाँ, उसका मीनिंग क्या है? हार्ड वर्किंग मैं समझता हूँ, सुबह 6 बजे चालू करेंगे, रात को 12 बजे काम करेंगे, समझो हार्ड वर्किंग। स्मार्ट वर्किंग सर, स्मार्ट वर्किंग क्या होता है? हार्ड वर्किंग सर, स्मार्ट वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग। पहले ही एक बार बताया था सबको, आप रिज्यूमे में जो भी लिखते हैं आपका हर वर्ड का मीनिंग होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। यस सर। अब इंटरव्यू में आके पूछेगा स्मार्ट वर्किंग साहब, स्मार्ट वो तो स्मार्ट होता है साहब, ये क्या जवाब है? नो सर। ठीक है। और क्रिकेट और रीडिंग बुक्स कोई फायदा नहीं है। अब इंजीनियरिंग डिजाइन करने के लिए रीडिंग बुक्स क्या होता है, आप समझो, रीडिंग डिजाइन बुक्स, आई एम रीडिंग बुक्स ऑन सिविल इंजीनियरिंग, दैट इज इंटरेस्टिंग। आप समझ रहे हैं ना, आपका यस स्ट्रेंथ में आप लिखेंगे, हम सिविल इंजीनियरिंग बुक्स पढ़ने में बहुत पसंद है, वो लिखेगा तो फायदा है। खाली Yes. क्रिकेट देखेंगे, बुक रीडिंग बुक्स लिखने से क्या फायदा है आपको? यस सर। यस हर मैटर आप लिखते हैं इसमें, उसमें जोड़ना चाहिए आप क्या नौकरी अप्लाई कर रहे हैं, उससे जोड़ना चाहिए। यस सर। यस नौकरी करने के लिए ये सब जरूरत होना चाहिए। यस सर। समझ गए ना? यस सर। यस ओके, ठीक है। सो इतना ये तो मैं इतना बताता हूँ, फ्रेशर के लिए नौकरी लिखना मुश्किल है। यस सर। लेकिन आप इसमें 2-3 बार लिख के दिखाइए, एक बार वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 लिखिए। लेकिन Yes, sir. जैसे मैंने बताया, पहले आपके बारे में इंट्रोड्यूस करिए, आप कैसा आदमी है। यस सर। हार्ड वर्किंग स्मार्ट वर्किंग नहीं है, मैं पहले समझाया। यस कि सर। हमें जब भी फील्ड में जाते हैं, क्या प्रॉब्लम है फील्ड में, रहने के लिए जगह अच्छा नहीं है, यस सर। हर जगह पे हमें रोड बनाते हैं तो जंगल में होता है काम। यस सर। तो हम बोल सकते हैं काम, आप कहीं भी काम पे लगाएंगे, हम करने के लिए तैयार हैं। यस सर। ये एक पर्सनालिटी टाइप है, मतलब मैं आई एम विलिंग टू वर्क इन एनी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस आल्सो आई वर्क, ऐसा लिखेगा तो मालूम उठाते हैं आपको। समझ गया ना? यस सर। यस सर। क्योंकि वो नौकरी जो अप्लाई कर रहे हैं, हॉल प्रोजेक्ट्स में बहुत मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है कि पर्सनल पानी नहीं रहता है, बिजली नहीं रहता है, मच्छर रहता है, फिर भी आप करने के लिए तैयार है तो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। यस सर। जो भी सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रांग है, यस सर। वो उसमें अच्छा पॉलिश करके वो लिखिए। आई एम वेरी स्ट्रांग इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, आई यस एम सर। वेरी स्ट्रांग इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। जो यस सर। सब्जेक्ट आप एकदम स्ट्रांग है वो हाईलाइट करिए, क्योंकि सवाल उसमें आएगा, आप जवाब दे सकते हैं इंटरव्यू में। यस सर। ओके, ऑल राइट, यस सर। गुड लक। थैंक यू सर। रवि जी, यस एक मैम। और चीज जो मुझे आपको कहनी है वो यस है मैम। कि जब भी आप अपना रेज्यूमे शेयर करते हैं तो हमेशा पीडीएफ फॉर्मेट में करिए, कभी भी Yes, इमेज ma'am. फॉर्मेट में नहीं करना चाहिए। वो क्यों Yes, करते ma'am. हैं वो अभी आपको 5 मिनट में पता चलेगा, बिकॉज वो मेरा अगला सवाल है टीएमडी से, ठीक है Yes, ना? ma'am. Yes, ma'am. So TMD, as I was telling Ravi, you never send a JPEG or an image file for a resume, and you always
always send a PDF, because most of the companies nowadays are using ATS, applicant tracking system, right? And that applicant tracking system doesn't read an image file. It always reads a PDF file or a Word file. So that being said, another interesting article that I read was about how ATS is taking over and how companies are using ATS. So I wanted you to take a minute and tell about what an ATS is. And I have the article that I read said that a candidate should know a workaround an ATS. So I just need an explanation on that, if you could explain. तो हमें जैसा रवि से बात कर रहे थे हम लोग, एक नौकरी के लिए 2000 लोग अप्लाई करते हैं, फिर कैसे शॉर्टलिस्ट करेंगे हम? इसलिए तो हम एटीएस यूज करते हैं. एटीएस में जब भी हम अप्लाई करते हैं वो फॉर्म भरते हैं. फॉर्म के हिसाब से फॉर्म में सब डिटेल हम लोग बोलते हैं मस्ट क्राइटेरिया. समझो हमारे शॉर्टलिस्ट क्राइटेरिया है बीटेक सिविल इंजीनियरिंग 2 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए एक नौकरी के लिए. तो फॉर्म में आएगा व्हाट इज द बेसिक क्वालिफिकेशन, व्हिच ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव. इफ यू पुट 0, एटीएस आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारा एटीएस का काम है 2000 से कम करो, 50 तक लेके आओ, मतलब 1950 को रिजेक्ट करो. तो एटीएस सब लोग कंपनी यूज करते हैं क्योंकि ऑटोमेटिक शॉर्टलिस्ट नहीं करने से बहुत रेज्यूमे बहुत बढ़ जाता है, कोई आदमी को शॉर्टलिस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. दूसरा, एटीएस में कैसे हमारा रेज्यूमे जोड़ना वो बड़ी स्पेशलाइज्ड बात है, क्योंकि रेज्यूमे में और एटीएस फॉर्म में हम झूठ नहीं बोल सकते. झूठ बोलेगा तो मालूम पड़ जाता है. समझो मैं लिखता हूँ बीटेक कंप्यूटर साइंस और बीटेक कंप्यूटर साइंस फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी 86% मार्क लिखा है. आपको मालूम नहीं होगा, शायद आप ही कॉलेज में से वही कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से कोई दूसरा अप्लाई किया होगा, उसको एटीएस को मालूम है. जब भी कंपेयर करेंगे उनका परसेंटेज 62% है, आपका 86-88% है. फिर हमारा सवाल उठता है, ये क्या, ये स्पेशलिस्ट है या टॉपर है क्या? हम पूछ सकते हैं उसको, अरे भाई तुम्हारा कंपनी कॉलेज में ये टॉपर कौन है? तो बोला आपका नाम नहीं आ रहा है. फिर क्या आप 86% कुकअप करके लगा दिया? तो एटीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है सच बोलना, और इसमें 2-3 कॉलम होता है. ओपन टेक्स्ट में ही आपका पर्सनालिटी बस दिख सकता है, बाकी सब आपका ज्यादा स्कोप नहीं है उसमें. एटीएस में एकदम एग्जैक्टली ड्रॉप डाउन मेनू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है. तो आप जो भी बोलना सच बोलना चाहिए, इसलिए तो ओपन टेक्स्ट में आप कुछ आपका पर्सनालिटी के बारे में, आप क्या स्पेशलिटी है, क्या इंटरेस्ट है, क्या पढ़ते हैं, कोई अटैचमेंट दे सकता है. कभी कभी अटैचमेंट करने के लिए देते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिजाइन, जब भी हमने बात कर रहे थे रवि से, रवि डिजाइन में बहुत इंटरेस्ट है उनको, तो वो क्या करेंगे, एक डिजाइन जो किया है वो डिजाइन का एक डॉक्यूमेंट अटैच कर लेंगे. फिर क्या एप्लीकेशन जब भी खोलेगा उसको एक डिजाइन डॉक्यूमेंट भी देकर नजर आएगा. बोलेगा डिजाइन डॉक्यूमेंट क्यों दे रहा है भाई? वो खोलेगा तो डिजाइन इतना अच्छा है. तो क्वालिफिकेशन आपको 2 साल एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी हम देख सकते हैं आपको, क्योंकि आपका डिजाइन अच्छा है. तो आपको यही सोचना चाहिए. समझो मस्ट क्राइटेरिया हम उससे मिलते नहीं है, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए क्या डेटा देना चाहिए, उसकी वजह से हमें शॉर्टलिस्ट होने का संभावना है. इज वेरी इंपॉर्टेंट. Got it, sir. So we have our next person, and he is Mr. Javed. Javed ji, can you unmute yourself, please? Good evening, madam. Hello ji. So I'll just share my screen and okay. Over to you, TMD and Javed. Good evening, madam. I think जावेद साहब ने बराबर लिखा है डिस्क्रिप्शन, आपने बढ़िया लिखा है. क्विक एंड पैशनेट लर्नर pursuing a career in sales and hard working team player with motto to experience. थोड़ा बड़ा ही है, increase the percentage. Yeah. So this is a good starting point. A quick and a passionate learner pursuing a career in sales. A hardworking team player, which is good. Team player is good.
as a motto to experience and excel the marketing by participating in each stage from idea to execution. मैं आपको ये सवाल पूछ सकता हूँ जावेद साहब, आपने लिखा है या कट एंड पेस्ट किया है? यस सर। सर आपने लिखा है, कट एंड पेस्ट किया है इसको? लिखा है सर, ये आप हाथ से लिखा है और किसी और का लिखा हुआ कट एंड पेस्ट किया है? आज से लिखा है साहब ये। आपका खुद का इंग्लिश है? सर आपका खुद का लैंग्वेज है ये? जो भी लिखा हाँ है सर, आपका यस खुद है ना? मैं लिखा है सर, वो मैं लिखा है। वेरी गुड, वेरी गुड, इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इसमें। हार्ड Okay, sir. वर्किंग विद अ मोटो टू एक्सपीरियंस एंड एक्सेल द मार्केटिंग एंड बाय पार्टिसिपेटिंग, दिस इंग्लिश इज नॉट गुड। तो आप किसी को Okay, sir. दिखाइए, आप थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करिए। आप क्या बोलना ठीक चाहते है हैं कि हमें सेल्स में पहले फर्स्ट स्टेज फ्रॉम आइडिया टू द लास्ट स्टेज ऑर्डर, एग्जीक्यूशन नहीं होता है सेल्स में, मार्केटिंग में हम लोग को एग्जीक्यूशन नहीं करते हैं। फ्रॉम आइडिया sir. टू ऑर्डर और आइडिया टू कलेक्शन इज व्हाट माय इंटरेस्ट इज। वो बोलेंगे तो आप समझ सकते हैं मार्केटिंग। एग्जीक्यूशन में इतना प्रायोरिटी नहीं है सेल्स वाले को, आप समझ रहे हैं ना? ओके सर। एग्जीक्यूशन के लिए अलग लोग रहता है, डिलीवरी लोग। But I think you need to rewrite, but I'm happy that you started with your own language. Second part, male, 24 years, date of birth, mobile phone, is very neat. I like that. A top portion जो आप लिखा है ना, अच्छा है, clean है. So I must give you good marks for that. Now work experience आ गया अभी, इसमें देखते हैं। Axis Bank हैदराबाद, अभी क्या है? अक्टूबर 2021, BD मतलब आप कासा बेचते हैं, कासा और हाउस लोन, दिस इज हाउसिंग लोन, home loan, business loan, and I see. So you are not working for Axis Bank, you are working for a staffing company. टीम लीज है एक्सिस बैंक में? एक्सिस बैंक, यस सर। एसेट साइड में नहीं करते हैं ना वो लोग? हाँ यस सर। होम लोन, बिजनेस लोन सब एसेट साइड है, लायबिलिटी साइड बैंक में है। एसेट हाँ, साइड क्रेडिट कार्ड्स। जिससे आप लिखा है हैंडलिंग होम लोन, बिजनेस लोन एंड LAP प्रोफाइल, दिस आर एसेट साइड ना बैंक में? Yes, sir. Selling credit cards and loans to customers. Yeah, but are you on the rolls of Axis Bank or on the third party rolls? Yes, sir. आप सवाल पूछते हैं ना जावेद मेरा? जी, आप एक्सिस बैंक के रोल्स पे काम करते हैं क्या, या आप किसी हाँ, थर्ड yes, पार्टी yes, sir. कंपनी के रोल्स पे काम करते हैं? Yes, sir. थर्ड पार्टी कंपनी आपको जावेद जी, आई जस्ट आस्क यू अ क्वेश्चन, आपको ये पता है कि आप किस कंपनी के रोल्स पे काम करते हैं? Third party role. थर्ड पार्टी रोल, थर्ड पार्टी। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं एक्सिस बैंक पे काम करता हूँ ज्यादा, मुझे देखते ही मालूम पड़ गया ये आप तो एक्सिस बैंक में नहीं कर रहे हैं, ये गलत, आप जो भी लिखा है वो गलत है। Yes, sir. Yes, sir. इसमें रिजेक्ट हो जाएगा आपका केस। Third party role है सर वो। हाँ, so you have to be very careful because जो भी हम एक्सिस बैंक, you should say representing Axis Bank लिख सकता है। You cannot say Axis Bank, you should say representing business development executive hyphen representing Axis Bank is correct. Yes. But Axis Bank में नहीं कर सकते, ठीक है? और दूसरा क्रेडिट कार्ड और हाउसिंग लोन और बिजनेस लोन एक ही लोग कहाँ करते हैं? बिजनेस लोन अलग करते हैं, हाउसिंग होम लोन अलग करते हैं और क्रेडिट कार्ड अलग है कंपनी में। आप तीनों करते हैं क्या एक्सिस बैंक में? Yes, sir. तीनों करता है। देखो कौन से थर्ड पार्टी है ये? कौन से थर्ड पार्टी रोल्स में है? किस कंपनी के रोल्स पे हैं जावेद जी? मैडम, आप किस कंपनी के रोल्स पे काम करते हैं? आप थर्ड पार्टी रोल्स पे काम करते हैं बोले ना? कौन सी कंपनी के, कंपनी का नाम क्या है पूछ रहे हैं वो? कंपनी का नाम जिस कंपनी के रोल्स पे आप काम करते हैं, थर्ड पार्टी रोल पे काम करते हैं ना? हाँ, हाउसिंग लोन। कंपनी का नाम पता है आपको जिस कंपनी के नाम पे आप काम करते हैं? एक्सिस बैंक के लिए एक्सिस बैंक के लिए आप रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आप थर्ड पार्टी रोल्स पे हैं, राइट? वो थर्ड पार्टी कंपनी का नाम पता है आपको?
ठीक है, अब इतना मैं बता सकता हूँ। नहीं पता है मैडम। Okay, no problem. नहीं, पहले इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी लिखते हैं रिज्यूमे में, जो भी आप सच बोलना चाहिए। आप एक बात सच नहीं बोलेंगे ना, आपका रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाएगा पहले से ही। ठीक है सर। क्योंकि टीएमआई में हम लोग एक्सिस बैंक के लिए पूरा ट्रेनिंग हम करते हैं, बीडीई के यस लिए। सर। बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव नॉर्मली इस खासा रोल्स ओनली, दे डोंट यूज द वर्ड बीडीई, राइट? हमको मालूम है। ठीक है। तो इसलिए तो आप उसको रीरेट करिए। आप क्या लिखते हैं, हमें आप थर्ड पार्टी रोल से हम कंपनी का रोल में जाना चाहते हैं, वही हमको इंटरेस्ट है ना, आपको भी यस सर। वही आपको इंटरेस्ट है ना। अब बैंक का रोल्स में जाना चाहिए आपको, ये फंसा यस इंडस्ट्री। सर। आपके क्या इंटरेस्ट क्या है अभी? बट आई एम शिफ्टेड टू यू वांट टू शिफ्ट टू सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर साइड। सॉफ्टवेयर साइड। गुड ऑन। But I want to shift software sir. हाँ, देन दिस रिज्यूमे विल नॉट फ्लाई। आपको तो वो चांस ही नहीं है, कोई शॉर्टलिस्ट नहीं करेगा। समझो, आप समझो आपका खुद का कंपनी है, राइट? आपके पास एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, एक आदमी आपको अप्लाई कर रहा है ऐसे जैसा, आप शॉर्ट करेंगे क्या, शॉर्टलिस्ट करेंगे क्या उसको? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्या करेंगे आप? कौन सा रोल करेंगे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री? कोडिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, बीआई बिजनेस इंटेलिजेंस करेंगे, क्या करेंगे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री? टेस्टिंग। समझो आप टेस्टिंग करना चाहते हैं। टेस्टिंग करने से आपका जो भी अभी काम कर रहे हैं, बैंक में काम कर रहे हैं, बैंक के लिए काम कर रहे हैं, वो नौकरी और टेस्टिंग से क्या संबंध है? उसका कोई वैल्यू है? जो भी आप काम कर रहे हैं, तो होम लोन बेचते हैं, उसका और टेस्टिंग में क्या मतलब है? क्या रिश्ता क्या है? रिश्ता तो कुछ भी नहीं है, मैं के इंटरेस्ट है टेस्टिंग के। इम्पोर्टेंट है। इस आप मेरे बात सुन लो, मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूँ, राइट? पहले हम्म। सब आपको टेस्टिंग में करना है, पहले जाके टेस्टिंग में जाके कोर्स करो, टेस्टिंग कोर्स करो, टेस्टिंग में सर्टिफिकेशन लो, फिर बात करो टेस्टिंग के बारे में। और आपको टेस्टिंग का मालूम ही नहीं है, टेस्टिंग क्या होता है? टेस्टिंग के लिए एक टूल होता है, मालूम है ना आपको? समथिंग कॉल्ड परफॉर्मेंस टेस्टिंग, समथिंग कॉल्ड बग फिक्सिंग, देयर आर रेडीमेड टूल्स अवेलेबल। बहुत कुछ है टेस्टिंग में, स्पेशलिस्ट एरिया है। जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे सिविल इंजीनियरिंग में, डिजाइन का मतलब क्या है, यू यूज ऑटोकैड, स्ट्रक्चरल डिजाइन अलग है। समझो आप जब भी आप नौकरी का अप्लाई करते हैं, जो कौन सा रोल अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं, कुछ समझ के उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन चाहिए आपको। समझ गया ना? ये बीटेक कौन सा ब्रांच है आपका? मुझे पता है और मालूम थोड़ा थोड़ा। हाँ, आपका बीटेक कौन सा ब्रांच है? ट्रिपल ई ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। हाँ, ट्रिपल ई, ओके। वो लिखना चाहिए। ट्रिपल ई से कोई थोड़ा संबंध है सॉफ्टवेयर से, नहीं तो बीटेक Nice. सिविल होएगा तो कोई सिलेक्ट नहीं करता है ना आपको। यस। तो ये रिज्यूमे कभी भी ये चांस नहीं है, इसको शॉर्टलिस्ट करेगा, चांस ही जीरो है। आपको कंप्लीटली रीरेट करना पड़ेगा। फर्स्ट जाके, आपको टेस्टिंग में इंटरेस्ट है तो टेस्टिंग को जाके सर्टिफिकेशन बनाओ। समझ गए ना? आप पहले टेस्टिंग के बारे में पढ़ाई करो। आपको कुछ मालूम है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है? कोई नॉलेज है मालूम है सर। जावेद जी? क्यों आपको मालूम है सर। testing जाना है? मालूम है। आप बताइए, हमको बताइए टेस्टिंग क्या होता है सॉफ्टवेयर में? आप हमारा मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूँ। टेस्टिंग इज ए ऐप और सॉफ्टवेयर। ओके, यस, गो अहेड। आप अपने वर्ड्स में बोलिए जावेद जी, जो भी आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है उस बारे में बात करिए। ओके मैम, टेस्टिंग बोलने का एक ऐप और सॉफ्टवेयर का है। हाँ, लैपटॉप एग्जिट कोई बात नहीं। आप आपको ये एक ही आप टेस्टिंग प्लेस ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता है वो।
और बराबर, प्रोजेक्ट्स भी करता है. करेक्ट. A software does suppose or not suppose भी करता है. बराबर. टेस्टिंग आंसर्स टेस्टिंग करता है उसमें. To get the confidence of the software, बोलता कॉन्फिडेंस भी लेकर था टेस्टिंग करके उसके लिए. Very good. I think so far you have answered it partly. करेक्ट आउटपुट देता है. आउटपुट टू गिव एन इनपुट. करेक्ट आउटपुट एक इनपुट को देता है वो. ओके, मैं बताऊं आपको सिंपली, इसलिए तो मैं अच्छा हुआ आप हमारे सामने आया है. मैं आपको जरा राय देता हूँ. पहले इसके बारे में अच्छी तरह एक बुक पकड़ो, बुक खरीदो टेस्टिंग के बारे में. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का लॉट ऑफ बुक्स है देयर. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का पर्पस क्या है? हम सॉफ्टवेयर एक पहले डिजाइन करते हैं, ये चीज करना चाहिए सॉफ्टवेयर. वो चीज जो डिजाइन किया है वो करता है या नहीं करता है, वो टेस्टिंग से मालूम पड़ता है. बराबर ना? दूसरा, टेस्टिंग में व्हाट वी कॉल बाउंड्री कंडीशन. टेस्टिंग कुछ कह रहे हैं आप जावेद जी? नहीं मैडम. ओके, या टीएमडी. या टेस्टिंग में बहुत कुछ डिफरेंस है. फॉर एग्जांपल समथिंग कॉल्ड परफॉर्मेंस टेस्टिंग. परफॉर्मेंस टेस्टिंग में जब भी हम यूज करते हैं, क्या स्पीड में काम करता है वो सोल्यूशन, उसमें मालूम पड़ता है कि बैक एंड डेटाबेस अलाइन हुआ, सॉफ्टवेयर अलाइन हुआ, सॉफ्टवेयर कोड अच्छा लिखा है. सेकेंडरी डीबगिंग है, वो भी टेस्टिंग है. डीबगिंग क्या होता है? कभी कभी सिनेरियो हम लोग को सोचा नहीं है, वो सिनेरियो आ जाता है सामने, तो सॉफ्टवेयर फेल हो जाता है, उसमें एरर कोड आता है. वो एरर कोड नहीं आना चाहिए, इसलिए तो हम टेस्टिंग करते हैं. तो टेस्टिंग जैसे आपने बताया पार्टली करेक्ट. टेस्टिंग इज टू मेक श्योर द सॉफ्टवेयर वर्क्स द वे इट इज डिजाइन्ड. समझ गया ना? सर. तो इसलिए तो बहुत कुछ आपको सीखना चाहिए. मेरा यही एडवाइस है आपको, पहले आप पैशनेटली इन्वॉल्व हो जाओ सॉफ्टवेयर में. पहले जाके बुक खरीदो, कोर्स करो, थोड़ा पैशनेटली कुछ टेस्टिंग कर रहे हो. आपके दोस्त को कोई कर रहा है, सॉफ्टवेयर लिख रहा है, उसके साथ बात करो, टेस्टिंग क्या होता है. जब भी आप इंटरव्यू में जाएगा ना, आपके पास 1 मिनट मिलता है बात करने के लिए. समझ गए ना? आप 1 मिनट में बराबर जवाब नहीं देगा ना, आपको रिजेक्ट हो जाएगा. यस सर. 1 ही मिनट आपके पास. वो 1 मिनट में आपको इंप्रेशन करना चाहिए. आपके पीछे 10 आदमी खड़ा है नौकरी के लिए. समझो आप अप्लाई कर रहे हैं जैसा HCL टेक्नोलॉजी या कोई टेक्नोलॉजी टेस्टिंग के लिए, आपके पीछे 10 लोग बड़ा खड़ा है ना. आप कैसा इंप्रेस करेंगे? स्पीड से आंसर बोल के स्पीड से जवाब देना है. हाँ, जवाब नहीं, पैशन होना चाहिए उसमें. आप समझ लेना, जवाब अपने आप आ जाएगा. एक बार आपको इंटरेस्ट हो जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया डिजाइन में इंटरेस्ट है, तो डिजाइन को थोड़ा डिजाइन टर्म में बात करना चाहिए ना. डिजाइन में बुक खरीदना चाहिए, बुक पढ़ना चाहिए. आपको कुछ मालूम नहीं डिजाइन का, कैसा बात करते हैं, डिजाइन करो. कौन देगा आपको नौकरी? सिमिलरली टेस्टिंग का जब भी आप बात करते हैं, उसमें पैशन होना चाहिए. बुक खरीदना पड़ेगा. तो उसमें क्या क्या टूल्स है, क्या क्या सॉफ्टवेयर है, जैसे आप बता रहे हैं, इट्स एन ऐप और अ टूल, प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं उसको. व्हाट इज वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, सब गूगल में अवेलेबल है ना? Sorry, TMD, continue. He's gone? No, he's there. जावेद है? बोले सर. अच्छा, मैं आप अभी बंद करने वाला हूँ. मेरा इतना ही कहना है. अच्छा हुआ आपको चेंज करना चाहते हैं, वो अच्छी बात है, वो कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है. लेकिन अगले 6 महीना में बहुत मेहनत करके सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए. करेंगे? ठीक है सर. अब करेंगे? शुक्रिया सर. ठीक है सर. शुक्रिया सर. हाँ, करो. फिर उसके बाद 6 महीने के बाद एक प्रोग्राम में आ जाओ, फिर मैं बात करता हूँ. ठीक है सर. ओके, थैंक यू. जावेद जी, I just want to say one thing. बोलिए मैडम. वो जो कह रहे हैं वो एकदम सही है. हम कभी नहीं बोलेंगे कि कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं कर सकते हैं हम.
बट व्हाट ही सेज इज अगर आपको इंटरव्यू में क्लियर होना है और अगर आपको उस जॉब में क्लियर होना है तो आपको डेफिनेटली उसमें इतना कोर्स तो करना पड़ेगा कि जब आपसे ऐसे सवाल पूछा जाए तो आप इजीली उसका आंसर दे सके कि अच्छा ठीक है, टेस्टिंग में ये सब होता है, मुझे इस तरह की टेस्टिंग में इंटरेस्ट है और मैं इस तरह की टेस्टिंग करना चाहता हूँ, राइट? ओके मैडम, तो आप आराम से अपना कोर्स करिए, एक बुक पढ़िए, उसको उसमें कोर्स करिए, और अगर आपको कभी भी कोई भी सवाल हो तो प्लीज हमें कांटेक्ट करिए और हम उसका जवाब आपको देंगे। आपको मिस्टर टी मुरलीधरन से बात करनी है तो कर पाएंगे, ठीक है ना? ओके मैडम। थैंक यू जावेद। So, Tiandi, before we go ahead to the next and the last candidate, I wanted you to talk about the JP Fit test, and because you tell people that they should write something about themselves and their personality in the About Me section. So, I want you to take about 30 seconds and tell us what is the JP Fitment test that we have designed. You're not audible, sir. Not clear? Now it is clear. Now it is clear. Every person cannot do every job. Like Akshita can do certain jobs well. I can do some jobs well. ये सवाल उठता है कि which job is suitable for my personality? That is what JP Fit test does. Job, personality, fitment. JP Fitment. इसमें क्या है, we give you some test and exam, kind of a test paper we give you to describe who you are. Like objective बता रहे थे, what kind of person are you, and then we mapped it to what jobs will require that personality. So आप टेस्ट लेने के बाद आपको मालूम पड़ेगा ये नौकरी, this kind of a job role if you do, you'll do well. This kind of job roles you do, you will not do very well. Right? So JP Fit is a computer-based test. We have already developed. You can post it later on, a link for them to go and take the test. I'm actually going to share my screen, and obviously I'll post the link in the link description box. It will be there. But this is the link to the JP Fitment test, www.jpfit.clanonline.in. CLANONLINE.in, jpfit.clanonline.in. आप अपनी पर्सनालिटी को अगर समझना चाहते हैं एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि आपकी पर्सनालिटी से कौन सा जॉब मैच करता है, ये टेस्ट के एंड में हम आपकी पर्सनालिटी ही नहीं, ये भी डिफाइन करते हैं कि कौन से जॉब्स आपके लिए सुटेबल रहेंगे, कौन से जॉब आपके लिए सुटेबल नहीं रहेंगे। और अगर आपको इस टेस्ट के साइंस के बारे में जानना है तो हमारे पास एक प्लेलिस्ट है, फाइंड योर राइट जॉब, जिसमें नो योर पर्सनालिटी करके एक यूट्यूब वीडियो है जिसमें टीएमडी ने इस जेपी फिट टेस्ट के साइंस के बारे में बात करी है। उसका भी लिंक वील पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन. प्लीज गो एंड टेक दिस पर्सनालिटी टेस्ट. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट and the best thing about it, it is absolutely free of cost. Yeah. So I have the 4th resume TMD, but the person who is supposed to be there is actually has dropped out due to network issues, but I will still show you, and if you could I'll just take you through it. So yeah, but if he's not there, why is the point giving feedback? I understand, but he had some network issue and he was really looking forward to this. So but let him bring him next time now. Okay, I'll do that. Otherwise there's no point in doing a review with somebody not there. I absolutely understand. Okay. So thank you so much, TMD, for taking your time out. I will take a couple of minutes more from everybody. And I want to show another thing to you all. And that is, this is a very unique thing that we've started. And that is India's first job helpline on SMS. So there is a dedicated number that we have. That number is 9154030544, and this number is monitored by me directly. And आप लोग इस नंबर पे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, SMS कर सकते हैं. ये नंबर पे व्हाट्सएप नहीं है, प्लीज व्हाट्सएप मत करिएगा. इस नंबर पे whatever career or job related questions you have, please SMS your questions to this number and I will get it answered by you. Please save this number. This is India's first job helpline on SMS for you people. Okay. So I want to end this session, TMD. If you want to exit, you can go ahead. But I wanted to recap
the points from the previous session, and I wanted to recap by mentioning them in different languages as much as possible. So again, the first and the most important thing about a resume is आपके resume में एक भी spelling mistake नहीं होना चाहिए. और अगर आपके resume में spelling mistake है, अगर आपको वो सही करना नहीं आ रहा है, तो I would request कि आप अपना resume किसी ऐसे इंसान से check करवाए जो आपके spelling mistakes को correct कर सके. Okay? Resume lo spelling mistakes ఉండకూడదు. రెజ్యూమేలో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉంటే చాలా చండాలంగా ఉంటది. And if I have to say this in Tamil, resume spelling mistakes irkapadaadu. There should be no kind of spelling mistakes on your resume. That is the most important thing. Your resume should be customized. आप जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए आपका रेज्यूमे बहुत उसके लिए आपका रेज्यूमे कस्टमाइज होना चाहिए उन लोगों के लिए. நீங்க உங்களோட ரெஸ்யூமேவை கஸ்டமைஸ் பண்ணுங்க. உங்களோட ரெஸ்யூமே உங்களோட ரோல் கோசரம், the role that you're applying for, the company that you're applying for that your resume must be customized. The third point is your personal interest. உங்களுக்கு என்ன इंटरेस्ट இருக்கு, आप लोगों को जो इंटरेस्ट है वो पर्सनल इंटरेस्ट को अलग सेक्शन में मत डालिए, उसको टॉप में एक सेपरेट प्लेस में डालिए जहां पे पीपल कैन रीड अबाउट यू. आपकी पर्सनालिटी के बारे में लिखिए, राइट अबाउट व्हाट इंटरेस्ट यू हैव, बट वो सब कुछ जॉब से रिलेटेड होना चाहिए. ओके, यदि जॉब से रिलेटेड, इट हैज टू बी योर पर्सनल इंटरेस्ट हैज टू बी रिलेटेड टू योर जॉब. Your resume should not be more than 1.5 page. ज्यादा पेजेस का अगर रेज्यूमे होता है तो वो रेज्यूमे जो पढ़ रहा है रिक्रूटर, उसको इंटरेस्ट चला जाता है. तो प्लीज रेज्यूमे को शॉर्ट रखिए. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रेज्यूमे में हाईलाइट करिए. हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन योर रेज्यूमे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप रिक्रूटर को क्या दिखाना चाहते हैं वो पॉइंट को एग्जैक्टली हाईलाइट करिए. हॉबीज सीवी में डालना जरूरी नहीं है. अगर आप अपने सीवी में हॉबीज डाल रहे हैं, वो हॉबीज शुड बी रिलेटेड टू द रोल एंड द जॉब दैट यू आर अप्लाइंग फॉर. वरना रीडिंग बुक्स, प्लेइंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, प्लेइंग अ स्पोर्ट, ये सब मैटर नहीं करता है. ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू से इज आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस मेंशन करना चाहिए, लेकिन वो ही सर्टिफिकेशंस जो आपके जॉब से रिलेटेड हों, वो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन मेंशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. द नेक्स्ट थिंग इज एडजेक्टिव्स ऐड करना है. अगर आप क्लास में फर्स्ट क्लास आए हैं तो फर्स्ट क्लास करके क्लियरली लिखिए. अगर आप 80-90% ला रहे हैं तो क्लास में ओके, आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स मैं 20th रैंक, मैं 15th रैंक, मैं 10th रैंक, मैं गोल्ड मेडलिस्ट, मैं फर्स्ट इन क्लास, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है. अगर ऐसी चीजें मेंशन नहीं कर सकते तो अपने स्कूल कॉलेज के बारे में पढ़िए और उसके बारे में लिखिए. जैसे कि आई हैव सीन समवन फ्रॉम लखनऊ. यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया. तो ये लिखना बहुत जरूरी है कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से हूँ और लखनऊ यूनिवर्सिटी इंडिया में इस रैंक पे आता है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो हम लोगों ने बोला है, मैंने कहीं पढ़ा था कि 76% रेज्यूमे रिजेक्ट होते हैं क्योंकि उसमें जो ईमेल आईडी होता है वो प्रोफेशनल नहीं होता है. बट नॉट ओनली दैट, अगर जावेद इस कॉल पे है तो ये भी मुझे आपको बताना है जावेद कि आपका जो ईमेल आईडी है वो आपके नाम से मैच नहीं करता है. सो इफ योर ईमेल आईडी इज नॉट मैचिंग योर नेम, फिर रिक्रूटर को कंफ्यूजन होता है कि क्या ये ईमेल आईडी गलत है. तो I think the safest option to write a correct email ID is your first name dot or underscore your last name @ whatever domain you're going to use, Gmail, Yahoo, Rediff, whatever. Okay, and the last thing that I want to tell you guys with what I want to close is, एक recruiter on an average खाली 6 सेकंड बिताता है आपके resume पर. So your resume has to be powerful enough that it captures the recruiter's attention in the first 6 seconds. So please spend time on your resume, and any help you need, please हमारे career convo channel पे आइए, उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए, एंड प्लीज आप अपने क्वेरीज को कमेंट्स में डालिए एंड we'll get it answered. In case
you want personal help and you don't want publicly writing comments or your questions, please go to our job helpline that we've started for the youth of this nation. You can send an SMS, you can send any question relating to a job or a career to 91504 30544. Okay, and if you want to understand your personality, please go to www.jpfit.clanonline.in. ये टेस्ट आपकी पर्सनालिटी बताता है, आप कौन से पर्सनालिटी के हैं, आपको कौन से जॉब सूट करते हैं, आपको कौन से जॉब नहीं लेने चाहिए. That also this personality test will tell you, and it is absolutely free of cost. Okay, so I'm going to end this session by saying thank you very much for being a part of this session. Thank you to all the people who submitted their resumes. I'm extremely sorry for the people who couldn't make it to this. And if you really want your resume to be reviewed by him, please send us your resume for the next session as well. And I will see you guys on the alternate Fridays, 2nd and 4th Friday of every month. Thank you so much. Have a good night. Bye.